गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आस समस्ते आस प्रणाम शुभ संध्या। तमर प्रिपरेशन कौन केमती चलची भल सब आस जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस वेरी इंपोर्टेंट सेशन पेडागोजी मैराथन पार्ट 5। हाँ जीवन टा भारी राजरास्ता उपरे रंगीन चलची कि ओके वेरी गुड। सो ठीक अच्छे बहुत बढ़िया कथा एंड आगामी दिन रे केमती समस्ते आहरी बढ़िया से रहिबो बढ़िया चलिबो। नाଇଁ ବ୍ୟାଡ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଡ୍ କୁ ଗୁଡ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ହଁ ଜୀବନଟା ତ ସେମିତି। ତ ପେଡାଗୋଜି ମାରାଥନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଆମେ ପଳେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ହିଟ୍ କରିଦିଅ। ଟିକେ ଭଲ ଫିଲ୍ ହବ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ଫିଲ୍ ହବ। ଆଣ୍ଡ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଥା। एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लिकेशन रे सब फीचर्स सहित जॉइन करि परिबो। फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप करि परिबो दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर बा व्हाट्सएप नंबर रे। ओके एंड तमे ओटीटी रिजल्ट नै कि कोन करिवो काई केमती होछ? ओटीटी रिजल्ट नै कोड जिवार अछि कि एबे तो किछि काई मते आगु किछि देखा जाउनी ओटीटी रिजल्ट नै कोड गला भलिया। हां परीक्षाटा देइछ बोली टिके से जो भितरे जोटा थाए सेटा टिके अछि ना। हां मिथुन लाइक फ्रॉम सीयूएच। हां एबे पूरा हरियाणा रे अछ ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा पूरा लाइक टा मारिछ पूरा ना। कंबो सब्सक्रिप्शन ऑल टीईटी एंड टीचिंग एग्जाम्स में प्रिपरेशन भल चलथिबो बोली भाबुची। एलटीआर पई ओएसएस टीटी पई आगु को आसीबा जेटीआर एचटी पई ओडिशा एजुकेशन सर्विस वैकेंसी 2025 रे प्रोबेबिलिटी टिके रहउची। प्रिपरेशन एबेट करूथिबो जदि 2025 रे गोटे स्वप्न गोटे टार्गेट को धरि कि ता ऊपर पुणी आ टिके काम अधिका करिवो। हाँ मिथुन हरियाणा रे तमे हरियाणा रु आसीच एया तो अमल कुल और आम पाखरे सब प्रकार एक्सपर्ट्स अछंती परा। एबे सीयूईटी रो पिलांकर डाउट होची सीयूईटी एक्सपर्ट्स को नेकी बसेबी गोटे दिन पांचटा सीयूईटी छुआ को डाकी दवा किए कर्नाटका किए हरियाणा किए झारखंड किए कुआडर अछ सब आसीबो हला मु कहि दोची बेठो। बाकी रहिला फाउंडेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ए कोर्स भी अछि एप्लीकेशन रे। आमे ऑलरेडी बहुत गुडे क्वेश्चन कर दैछे एठी मु आउ धीरे धीरे जीविनी एका बेले 201 को पढौछि 6 को पढे आसबे अरे र हाँ 201 अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की लर्निंग इज लर्निंग कहले कोन देख अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की लर्निंग इज वेरी गुड वेरी गुड। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म टा हला सोशल आउ कॉग्निटिव हेले पियाजेंकर तेणु an active process of constructing knowledge is correct। Asna does good because she would like to be seen as good by other people। At which level of moral development is she according to Lawrence Kohlberg? Asna को level रे अछि Lawrence Kohlberg करो काहे कि does good because she would like to be seen as good by other अन्य लोक भलो कोंतु बोली चाहुची से कोठी अछि stages of moral development Kohlberg
छटा देइथिले तीनटा लेवल रे ताको डिवाइड करा जाय नहीं कि जदि यही हिसाब रे मु देखेबी ताले पूरा स्टार्टिंग रे जदि कहबा ताले अवॉइडिंग पनिशमेंट तापरे सेल्फ इंटरेस्ट तापरे गुड बॉय नाइस गर्ल तो एटा एथ रे एक्चुअली आसुची तो फर्स्ट दीटा स्टेज को नहीं कि फर्स्ट लेवल जोटा को हमें प्री कन्वेंशनल बोली कहूचे तापरटा हला कन्वेंशनल तापर होची पोस्ट कन्वेंशनल तो प्री रे एटा नुहे कन्वेंशनल रे आसीबो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी लॉ एंड ऑर्डर नहीं कि ठीक अछि 8 रु 13 वर्ष बयस भितर सी अछि कहीं फर्स्ट अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट को जो देखिबा हमें 3 रु 7 वर्ष बयस प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल टा 8 रु 13 वर्ष पोस्ट कन्वेंशनल टा 13 रु एडल्टहुड कहबा हमें बा केवल एडल्टहुड कहि देले भी चलिबो जो रोचे सोशल कंट्राक्ट आउ प्रिंसिपल ठीक अच्छे तो ये कन्वेंशनल हम ओके मनसुन आसी जाओ progressive education in progressive education curriculum is standardized हेले एटा गुटे प्रकार नेगेटिव बी एति जिंसो जानि थाओ सिटिंग अरेंजमेंट टोटली फिक्स्ड हेले नेगेटिव एटा टेक्स्ट बुक आर ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज लर्निंग हैज a social character ये होचे राइट आंसर national education policy 2020 emphasizes on measurement of memorization ability केबे भी नुह standardization of national curriculum केबे भी नुह only the aspect related to cognitive development only is negative and only गोटे जिनस को फोकस करबा ठीक नुह flexible and multi level activity based learning is the right answer बहुत बढ़िया a teacher wants to facilitate comprehension skills among her students which of the following should be avoided by her for this purpose कोटा अवॉइड करबा कथा in order to facilitate comprehension skill तो कंटेक्स्ट रे रहिबा डिकंटेक्चुअलाइज्ड काई करबा डिकंटेक्चुअलाइजिंग माने जहां डिस्कस करूचे जो कंटेक्स्ट ऊपर आधारित रहिछि हमरो जो जिनस को हमें डिस्कस करबा दरकार जहां द्वारा फैसिलिटेट करि परिबा स्टूडेंट्स मानकर कंप्रेहेंशन स्किल रो डेवलपमेंट को ताठु दूरे कि जिबा अलगा आडे डायरेक्शन रे जिबाटा ठीक न डिकंटेक्चुअलाइजिंग इट शुड बी अवॉइडेड बहुत बढ़िया while teaching a concept a teacher is giving an example that has the most important core features of the category associated with that concept such an example is called it's a prototype while teaching a concept a teacher is giving an example that has the most important core features of the category associated with that concept such an example is called a prototype जोटा एक्जाक्टली सही कंसेप्ट जो कंसेप्ट टीचर बुझेबा को चाहुचंती एक्जाक्टली ता सहित कनेक्टेड रिलेटेड कोर फीचर उतप्रुत भाव रे जड़ित होइतिबो ए टाइप रो एसोसिएशन
होची प्रोटोटाइप ए साइड टाइप रो एग्जांपल होची प्रोटोटाइप ए टाइप रो कनेक्शन होची प्रोटोटाइप by encouraging students to reflect on their cognitive abilities to reach a specified goal, teacher is facilitating the developing of yes, very good. Metacognition, thinking about thinking is the right answer. हाँ जोटी मुंड रे कळ चलची देखुछ केमती सिस्टम चलची दैट इज cognitive ability students to reflect on their cognitive abilities to reach a specified goal. तो एनकरेज करछन्ती स्टूडेंट्स को टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज एठी कहिला निजरो कॉग्निटिव एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करिवो निजरो कॉग्निशन को रिकॉग्नाइज करिवो निजरो थिंकिंग विषय रे चिंता करिवो ये मेटा कॉग्निशन ओके चलो बी टी के एक्सप्लेन करिवि बी हला प्रोसीजरल नॉलेज कोन आटे एक्सप्लेन प्रोसीजरल नॉलेज माने होची नॉलेज जहा द्वारा गोटे प्रोसीजर को फॉलो करा जाय परिबो स्टेप बाय स्टेप जाय परिबो मालगुडी जाय एक्जेक्टली चंदन थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग the music. While conceptualizing teaching learning process, National Curriculum Framework 2005 emphasizes upon the importance of active engagement and interaction. बाकी सबू भूल जिनस पूरा नहीं कि एक्टिव एंगेजमेंट इंटरैक्शन टा 2005 एनसीएफ कहला एनसीएफ केबे केबे आसीतिला एनसीएफ 1975 रे आसीतिला 1988 रे आसीतिला 2000 रे आसीतिला 2005 रे आसीला आ एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज आसीला 2022 रे ठीक अछि ना नहीं देखि दियो एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज जोटा लेटेस्ट अक्टोबर 2022 रे ठीक अछि एनसीएफ एफएस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जोतरे रहला ईसीसी फुल फॉर्म आसी पारे फ्रेंड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ठीक है जो एक्स्ट्रा आडेला ना कोडी एनपी कहला छुआ को एथरो टिके जल्दी स्कूल पठा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 आगरु थिरा कोन 10 प्लस 2 प्लस 3 बा एटा जेतेबेले केवल एटा कहउचे 10 प्लस 2 कहबा 10 2 12 5 3 8 3 11 4 5 8 11 15 हेगला तो ହେଲା ନା ଏଠି 12 ଥିଲା ଏଠି 15 ହେଲା ये 6 ବର୍ଷରୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ଏଠି 3 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ସ୍କୁଲ କୁ ପଠେଇ ଦିଅ କହିଲେ ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିୟର 3 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତ ସ୍କୁଲ କୁ ପଠେଇ ଦିଅ କହିଲେ ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା ଏଠି ସେଠି 12 ତଳେ ହିସାବ କର ओके या ऊपर क्वेश्चन एनईपी क्वेश्चन बहुत आसे एबे भी के कस्तूरी रंगन यस केबे एनईपी केबे आसीतिला गोटे क्वेश्चन आसे एग्जैक्ट डेट एनईपी लॉन्च्ड इन जानी था केबे आसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च्ड इन 29 जुलाई 2020 तो कौन आउ पड़ जीवो सेट
To scaffold students in solving a problem, a teacher should confuse student directly, tell the answer, give cues that activities the relevant schema, that activates the relevant schema. जहाँ मुंडरे थिला ताकू आउ टिके एक्टिवेट करे दबो, मने पकई दबो, ता सहित कनेक्ट करी दबो, हिंट्स दबो, क्लूज दबो. ये होची स्कैफोल्डिंग टेम्पररी सपोर्ट, जहाँ को कहले लेव वाइगोट्स्की, रशियन भाई माने कोन भाई को कोन कहि परिबा अधिक. Which of the following is a sensitive period for acquiring language? Language को period रे छुआ सिखे. Early childhood, right answer, no doubt. Reasoning, curiosity, and observation power are developed at the age of. आज सकाळु सकाळु जोटा एप्लिकेशन रे करूथिलो reasoning से गोटा तो. Oh. Reasoning, curiosity, and observation power are developed at the age of. 11 वर्ष. फॉर्मल ऑपरेशनल को जाओ टिके से हिसाब रे करो हला. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पियाजे को. According to Piaget, the thinking of children differs from that of adults in dash rather than dash. In type rather than quantity. Type माने क्वालिटी अलगा, क्वांटिटी नुह. छुआंकर थिंकिंग टा अडल्ट मानकटू केमती अलगा अलगा हिसाब रे अलगा. केते भाबुछंती सेटा नुह, केमती भाबुछंती सेटा. Adults in type rather than quantity. Quantity रे फरक नुह, क्वालिटी रे फरक, थिंकिंग रो टाइप रे फरक अछि बोली कहले पियाजे. At which stage does the tendency of children to explore new things and wonder increase a lot? Question पचारुथिबे जे ଶୁଆଇବାକୁ ନେଇଥିବ, ନିଦ ତ ହଉନଥିବ, ହଁ ଉପରକୁ ଆଁ କରିକି ଭଲ କରି ଅନେଇଥିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଚାରୁଥିବ ଯେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦବ. ୟେସ୍ ଭାଇରେ ଭାଇ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି, 9ଟା ପାଖାପାଖି କଲ୍ କରୁଛି. ହଁ ଠିକ୍. Up to which stage of development is the maximum development of intelligence? आंसर कहली हाँ, adolescence. Yes. The purpose of assessment is to assessment कहीं की करछो, जो ए जिनसटा कहीं की ना फिगर आउट ways to support the learners in the learning process. कोठी सपोर्ट दरकार छुआ को कोठी सपोर्ट देले से बनी जीवो, राइट. सेटा को जानिबा, सेटा को आइडेंटिफाई करिबा, फिगर आउट करिबा. Which of the following questions promotes critical thinking?
Analyze the various ways in which urbanization, globalization affect people of different socio-economic strata. Analyze କହିଲା, ଚିନ୍ତା କର କହିଲା, draw a diagram କହିଦେଲେ କରିଦବ solar system, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। এটা ବି କରିଦବ। ଆରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଙ୍କିଂ ସଲ୍ୟୁସନ, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ, ଇଏ ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି? ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାପରେ ଥିଙ୍କିଂ, ତାପରେ ଦିମାଗ का बत्ती जलिगला। हाँ, ये होची क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोब्लेम सॉल्विंग कोई परिवा। Which of the following has been recommended by Clause 12 of Right to Education Act RTE 2009 regarding education of students belonging to economically weaker sections? कौन RTE कहला? अरे RTE कहला जे गरीब छुआ माने जो माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रे अछंती तांकू प्राइवेट स्कूल रे रिजर्वेशन रखा जिवो। केते परसेंट के कहबो जल्दी फटाफट कह दियो। वेरी गुड स्वाति, पचारिबा पूर्वरु उत्तर वेरी गुड 25%। वेरी गुड, थैंक यू ऑल जो माने आंसर देइछो। Which of the following strategy should a teacher avoid facilitating learning among students? Should a teacher avoid facilitating learning among students? Avoid कोटा करिवो, कोटा avoid करिवो? पैसिव इमिटेशन। बहुत जल्दी करिवार अछि आंसर। ए सब रे समय लागिबा दथन। यस, पैसिव इमिटेशन। इमिटेशन करिवा पई हमें केबे भी ताकू प्रोत्साहित करियो ने। हमें कोन करिवा कांसेप्ट मैकिंग, डिस्कवरी, इंट्यूटिव गेसिंग। इंट्यूटिव माने सेठी दिमाग रो यूज हिच। टीचर अवॉइड करिवे फैसिलिटेटिंग लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, पैसिव इमिटेशन। सेमिति, in order to facilitate meaningful learning, which of the following element of processing information is helpful? कोटा helpful, जोटा पॉजिटिव सेटा हेल्पफुल। मने पकाओ सही गिफ्टेड स्टूडेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स को। that is elaboration। FFOE थिला गिफ्टेड रो कैरेक्टरिस्टिक्स। FFOE रे हमर अछि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलाबोरेशन। Students learn through self initiated activity while actively engaging in discussions in a classroom based on। अच्छा, students learn through self initiated activity while actively engaged in discussions in a classroom based on को टाइप रो क्लासरूम रे से माने सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी करंती, एक्टिवली एंगेज रहंती। एंगेज रहंती तो मोर गोटे कथा भी मने पडुची। 5E मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय किए देइथिले? किए कहिबो? हां, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑफ राइट आंसर। यू आर करेक्ट। किए कहिबो? मु कहिछि आगरो केबे ना केबे कहिछि, एक्सप्लोरिंग गोल्स रे कहिछि, बट जानी थाओ जो माने जानी न। डॉक्टर रोजर बाइबी, co-creator of the model, the 5E model, where 5टा E अछि। किए कहि परिबो? प्रथमे करिबा कोन? एंगेज करिबा नै कि? एंगेज करि देले तापर से माने करिवे एक्सप्लोर करिवे। एक्सप्लोर कला परे एक्सप्लेन करिवे। एक्सप्लेन कला परे जदि किछि तमरो ऐड करिवार अछि, टीचर कोन करिवे? टिके एलाबोरेट करिवे। एलाबोरेट कला परे फाइनली इवैल्यूएट हबो। तो ए सब होछि 5टा जाको ई। क्लियर? हो, धन्यवाद रे। ठीक अछि।
बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन समस्तंकर। वेरी गुड, कीप गोइंग। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवालुएट। तो एठी एंगेज करिवा छुआ को, छुआ एंगेज हबो, छुआ एक्सप्लोर करिवो, छुआ कोन सिखिला एक्सप्लेन करिवो, तापरे जदि किछि छाडी दाइछि टीचर एलाबोरेट करिवे एंड इवालुएट करिवे। दैट्स इट। चंकिंग कहंती। चंकिंग, long string of letters by grouping that into memorable and meaningful part, जेमती आमे कहूचे FFOE, memorable भी हला, meaningful भी हला, and letters by long string of letters by grouping that, long string of letters कौन है तांता? Fluency, flexibility, originality, elaboration इतना को लिखिवा को पड़ी तांता। बामे जेतबेले पियाजेंकर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहूचे SPCF कहि दउचे, काहे कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल मने भी रहि जाउची। जेमिति 5E कहले आमे, पांचटा E कोन कोन? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवैल्यूएट। चंकिंग, पार्ट पार्ट करके मन रखिबाटा। Formulating new clarifications, going beyond the simple application of previously learned rules to achieve a goal, and evaluating the outcomes are important parts of. Problem solving is the right answer. निश्चित रूप में problem solving अब formulating new clarification, going beyond the simple application of previous learned rules to achieve goal, and evaluating the outcome. Yes, सब problem solving रो ଗୋଟେ part. Students feel motivated to learn when task is को टाइप रो टास्क ले स्टूडेंट्स को भीतर मोटिवेशन आसे लर्न करिवा पाई। when it is connected to their real life वा real life सहित जेतेबेले तारो कोनोसी ना कोनोसी हिसाब रे कनेक्शन थाए, सेतेबेले मोटिवेशन आसे, पढिले मजा लागे, पढिबाकू इच्छा हुए। In Howard Gardner's theory, persons high on dash intelligence have finer sensitivities regarding own identity, human existence, and meaning of life. Yes, intrapersonal, कहीं निजको से भावुची, निज विषय चिंता करुची, मीनिंग ऑफ लाइफ विषय चिंता करुची, ह्यूमन रो एक्जिस्टेंस कोन, निजर आइडेंटिटी कोन, निजर परिचय कोन, निजे किए ताको खोजुची, नोइंग योरसेल्फ within, looking within, it's intrapersonal. इंटर हे गले between two, interpersonal हे गले yes others, मो तमको जानली, interpersonal इंटर हला मो मते जानली। Dysgraphia is a dysgraphia is related with what? Writing. आमे जानि छ राइटिंग रे प्रॉब्लम, आ एठी राइटिंग ता कोठी अछि? ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। लोकोमोटरी तो dyspraxia, स्पीच तो dyslexia, बुझियला?
lack of attention କହିଛି ତ attention deficit hyperactivity disorder ADHD ଆସିପାରିବ। Next, the approach to educating gifted children which moves them through curriculum at an unusual rapid pace is known as yes, acceleration, move them through curriculum at an unusual rapid pace କହିଛି acceleration ଆସିବ। ଏଠି approach to educating gifted children which moves them through curriculum at an unusual rapid pace, unusual rapid pace ମାନେ acceleration ରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଖ enrichment gifted ମାନଙ୍କ ସହିତ related no doubt gifted ଆସିଛି ତ enrichment ହବ but କଣ ହଉଛି educated gifted which moves them through curriculum ଏଠି unusual rapid pace ବୋଲି କହିଲା थ्रो करिकुलम मूव करके नउची अनयूजुअल रैपिड पेस रे जदि चैलेंजिंग टास्क दउची ताले एनरिचमेंट कहबा हमें चैलेंजिंग टास्क थ्रू रे हमें जाउचे तांकु चैलेंज फील होउची तांकु मजा आसुची तांको लेवल रो क्वेश्चन दउची दैट इज एनरिचमेंट एटी स्पीड कथा कहिची पेस कथा कहिची टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम curriculum adaptation karibe incorporate diverse perspective examine their own implicit bias see diversity as a obstacle as an obstacle ए गोटा को मत कहीं पूरा टोटल मुश्किल लागिला बाकी implicit bias देखो examine their own implicit bias तांकर जदि किछि biasness अछि ताको examine करूछि टीचर जदि examine करूछंती ताले बहुत भलो करूछंती जे चेक करूछंती जे मोर किछि biasness नाही तो मु कहारी प्रति बेसी अन्याय करूनी तो काहाकू बेसी इंपोर्टेंस दउनी तो एग्जामिन करबा इज अ गुड थिंग डाइवर्सिटी निहाती अछि ताको इनकॉर्पोरेट करबा भी भलो जिंसो क्रिएट करिकुलम अडॉप्टेशन एटा भी निहाती दरकार इन इंक्लूसिव क्लासरूम सो बी इज द राइट आंसर वेरी गुड while dash agencies of socialization are predominantly important in infancy dash agency of socialization also become important in early childhood सागरी मु कहिछि टिके आउ थरे देखि दबो निजे टिके भी analysis करी while primary agency of socialization are predominantly important in infancy secondary agencies of socialization become important in early childhood primary टा कोटा primary टा पूरा घर परिवार तो infancy तो तमर परिवार रे कटिला secondary माने स्कूल टा early childhood रे important role play करूची अतः B is the सठिक उत्तर आज हमर ओडिशा सारा जिते ब्लॉक्स अच्छे सब ब्लॉक रे बीओ माने सेकेंडरी हेडमास्टर मानकर मीटिंग रखी माने एज पर द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट तो आम ब्लॉक रे भी थिला हेले एचएम माने सब गोटे जिनस आज डिस्कशन रु बाहरिला जोटा कि माने कोन आसला जे टीचर माने कहले सर आपण कहउचंती 10th रे बढ़िया रिजल्ट दे दियंतु किंतु से माने प्राइमरी एजुकेशन तांकर स्ट्रांग नुह से माने आसुचंती निज ना लिखि पारुनांती अक्षर लिखि पारुनांती दिस इज प्रैक्टिकल थिंग टिके कहि दउची तो सेठी हमें कोन करि परिबु मु कहले आपण कोन करि परिबे सेटा निजे भाबंतु
अन्य को दोष न देकी कौन करि परिबे, राइट? प्राइमरी एजुकेशन को दोष दे परिबेनी, यू कैन नॉट डू दैट। तो आपण कौन करि परिबे, आपन लेवल रे सेटा चिंता करिवार अछि। जदिओ प्राइमरी एजुकेशन को आमे निश्चित रूपे फोकस करिवा, तापरे नेक्स्ट आउ गोटे जिनिस होला, टीचर आमको जो स्टूडेंट्स मिलती गवर्नमेंट स्कूल रे, टीचर माने कहले जे सर देखंतु वर्तमान समय रे सब प्राइवेट स्कूल गले, केबी गले, जेएनबी गले, डीपीएस गले, नवोदय गले, शेष रे ओए भी गले, तापरे सर आम पाखरे जहाँ रही गले से मानको आमे पढ़ौछु। मु कहली देखंतु यू आर द टीचर्स, हाई स्कूल सेकेंडरी टीचर्स, प्राइवेट स्कूल रे जो माने पढ़ौचंती दे आर नॉट दैट मच कैपेबल, सेति पई से माने प्राइवेट रे अछंती, गवर्नमेंट रे पाई नांती। आपण माने बीएड पाई एंट्रेंस देले, आपण माने ओटीईटी देले, सीटीईटी देले, ओएसएसटीईटी देले, सीबीटी देले, एते वेरीफाई परे सीबीटी रे प्रीलिम्स देले, मेन देले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करले, तापरे आसिले मेरिट लिस्ट थिले बोली। यू आर दैट मच कैपेबल कि जो पिला रही गले तांकू पूरा शीर्ष रे पहुंचाई परिबे। यू आर कैपेबल, सो यू आर गिवन such students who are poor, गरीब and बेसी एजुकेटेड बा बेसी टैलेंटेड नुह, तेणु तांको सक्सेसफुल करिवार कैपेबिलिटी आपन पाखरे अछि आज्ञा, सेति पई आपन को गवर्नमेंट देइछि, गवर्नमेंट डिसाइड करिसंते, सेति पई आपन एई गवर्नमेंट स्कूल रे अछंती। यू शुड फील दैट। आगु को जीवा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की कहले लैंग्वेज कथा कहले, सोशल कथा कहले, कल्चरल कथा कहले। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नुहे, डिपेंडेंट। सोशल से कहले लैंग्वेज ऊपर कॉग्निटिव टा डिपेंड करे बोली कहले। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोली एटा से कहिसंती। माने लैंग्वेज डेवलपमेंट हबा जोगु ही कॉग्निटिव हेई पारुची कहले, तार जस्ट उल्टाटा पियाजे कहितले। पियाजे कहितले कॉग्निटिव हबा जोगु ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होछि। बुझिलो तो ठीक अछि। आगु जिबा। At which level Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectation of the society and behave in good ways? Moral development, Lawrence Kohlberg. Conventional level of expectation good, on your expectation good माने good boy nice girl ना, conventional आसिला post को कहीं की जाउछ। सोसाइटी गुड कहवा दरकार, सोसाइटी गुड कहबो गुड बॉय नाइस गर्ल टा भी हबो आ ता परटा जोटा अछि कोटा लॉरेंस कोलबर्ग मोरल रीजनिंग फर्स्ट रहिला कोन अवॉइडिंग पनिशमेंट, अवॉइडिंग पनिशमेंट रो ऊपर को जदी हम पळेबा कोन रहिला सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय एटीट्यूड बा नाइस गर्ल एटीट्यूड आ ता ऊपर रहिला लॉ एंड ऑर्डर। एई दीटा रे रहउछि ता माने तो एई दीटा कोन कन्वेंशनल लेवल। टोटल तीनटा लेवल अछि, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्रतिटी लेवल रे दी दीटा स्टेज अछि, राइट? टोटल 6 stages, 3 levels. Read the following statements and choose the correct option. Very fast and very good.
Interaction with more knowledgeable other MKOs, such as teachers, peers, can provide necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills. Correct. Social interaction is key components of learning and development. Correct. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Correct. कुछ भी. What is the main goal of assessment for learning? Assessment for learning असले 3F को मने पकेबो. Assessment for learning रे for गोटे F फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली ताकू कुआ जाए. तेणु आ गोटे F होची फॉर्मेटिव, आ गोटे F होची फीडबैक. तो आंसर कौन होबो? जोटे फीडबैक अछि टू प्रोवाइड फीडबैक्स टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग. सो ये होची असेसमेंट फॉर लर्निंग रो कथा. One of the main characteristics of pre-operational thought, according to Jean Piaget, is thus, which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others. गोटे जिनस माने गोटे जिनस ऊपर ही फोकस थिबो, आ अन्य जिनस किछ आसीबोनी. गोटे जिनस माइंड रस तो सेटा ही चिंता करछि से. तो प्री ऑपरेशनल थॉट एटा को कुआ जाउछि बा प्री ऑपरेशनल पीरियड रे थॉट ता देखा जाउछि. एटा को टाइप रो गोटे जिनस रे जतबे कंसंट्रेट करि दबो अन्य गुडा को देखा जिवोनी. सो इट इज कंसंट्रेशन बा सेंट्रेशन. गोटे जिनस ऊपर फोकस centered around a single thing at once. मल्टीपल जिनस को एका बेले के भाबी पारुनी. तेणु गोटे जिनस ऊपर फोकस करू करू अन्य गुडा को नेग्लेक्ट होउछि. प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years चिंता रे. In early childhood, growth dash and thinking is dash, while in middle childhood, growth dash and thinking is dash. ग्रोथ टा जते छुआ अवस्था को जीवो सेते स्पीड हबो स्टडी. ग्रोथ इज स्टडी एंड थिंकिंग इज समवट इगोसेंट्रिक रहे. अर्ली चाइल्डहुड रे इगोसेंट्रिक. मिडिल चाइल्डहुड आसी गले ग्रोथ स्लो हो जाए किंतु लॉजिकल थिंकिंग टा डेवलप करे. मिडिल चाइल्डहुड टा हम लॉजिकल थिंकिंग कहला को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भाबो. फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. जानिछो बहुत भल से जानिछो. लुक फिजिकल ग्रोथ जतबे कहूचे हम सेफालोपोडाल और प्रोक्सिमोडिस्टल जानिछे. सेफालोपोडाल और प्रोक्सिमोडिस्टल दीटा ऑप्शन रे अछि. कोटारे ठीक ऑर्डर रे अछि देखि दबार अछि. सेफालोपोडाल कहले टॉप डाउन काहे कि ना हेड टू टो. प्रोक्सिमोडिस्टल कहले सेंटर टू पेरिफेरी तेणु इनर टू आउटर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एटा सेंटर टू पेरिफेरी कहूछ ना तो इनर टू आउटर हला. एटा हेड टू टो कहूछ मुंडरू गोड़ पर्यंत तो टॉप टू डाउन हला. Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? Discouraging independent thinking. इंडिपेंडेंट थिंकिंग टाकू एनकरेज करबा कथा. डिस्करेज कहूछ तो हबनी. एनकरेज देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. अरे अवॉइड कले तो जीवन रे सब जिंस को अवॉइड कर देबे. सब डिफिकल्ट लागिवो. प्रोवाइड देम विथ रेडीमेड सॉल्यूशन. आ रेडीमेड सॉल्यूशन केबे भी दबनी. तांकू निजको सॉल्यूशन बाहर करबा को दबो. तेणु अपॉर्चुनिटी दबा ब्रेनस्टॉर्म पाई एंड इंट्यूटिव गेसेस बा चिंता करी कि किछि गेस करू. इंट्यूटिव गेसेस गेस केवल अंदाज वाला गेस न होइटा. इंट्यूटिव माने निजो भीतर को नेला एनालिसिस कला आ भाबुछ जे मो भाबुछ एटा हितबो. आई एम नॉट श्योर. ए टाइप रो आंसर दबा को ताकू एनकरेज करबा अपॉर्चुनिटी दबा. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. अल्टरनेट आइडिया. एग्जैक्टली.
into deep guesses. Which of the following process does not contribute to the course of learning? ଜାଣିଛ already କରିସାରିଛେ डिकंटेक्चुअलाइजेशन टा निश्चित रूपे कौन काम रे आसीबनी रश्मि श्योर रेडी करो बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो माने लाइक करिनो वीडियो को निश्चित रूपे बहु मात्रा रे भलो पाइबा दे लाइक करो बहु मात्रा रे कोन जनका थरे लाइक करो मो आ बहु मात्रा कोन आउ टिके फ्रेंड्स मान को सहित शेयर कर दियो सो दैट they can also reach exploring goals. That will be a great help. Okay, so for them and for me also. So पढ़ेवा तो समस्ते जमती जानी पारिबे आ टिके सेति पय समस्ते सहाय्य करो आगु को बढ़ुछ पुणी 238 को which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन Which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking? Thank you very much. 238 right answer hochi. Very good. कोटा गोटे एग्जांपल ऑफ थिंकिंग ऑफ गोटे एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन जोटी कौन तार निजर थिंकिंग टा आसो रिफ्लेक्ट हबो तो देखो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब एठी निजर किछि नाही या घोषिछि कहि दबो डेफिनेशन ऑफ वर्ब भी घोषि के कहि दबो चेंज ए वर्ब टू प्रेजेंट टेंस एटा भी घोषा हाउ has your thinking about the use of verbs changed since the beginning of the class एठी इनोवेटिव आसीबो एठी क्रिएटिविटी आसीबो एठी डाइवर्जेंट थिंकिंग आसीबो एठी ओन थिंकिंग टा रिफ्लेक्ट हे परियो which of the following example of internal attribution for failure Santosh 239 right answer hochi I failed the test because I did not study enough ये इंटरनल अट्रिब्यूशन मोर भूल कहीं मु न पढ़ा जो फेल हेली निजक भूल दवा निजक दोष दवा बाकी लो ग्रेड बिकॉज टीचर इज टफ हाँ बिकॉज द टीचर इज ए टफ ग्रेडर टीचर मार्क देलानी आउ ना मु तो लिखिदेली मास्टर मूड खराब थिला बोधे I did not get good mark because the teacher was biased. टीचर तो दास बाबू झील को सब मार्क देदेला मत कौन दब सी जाणिकी कमे देछि I failed the test because my friends were distracting me. मो फ्रेंड्स मते डिस्टर्ब कले सेति भाई मो फेल हेली ये सब एक्सटर्नल अट्रिब्यूशन इंटरनल माने निजको दोष दबा आकु जिबा 240 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by छाड़ कोटी हुए कौन न हुए सेटा संतोष कहीं कहवा क्या किसी हाँ आम निजर कर्म फल तो भोगुचे 4-year-old Aparna says button भी लाइव अच्छी गोड़ो बेंच भी लाइव अच्छी डेस्क भी लाइव अच्छी छुआटा चल की गला बेले जदि ता गोड़ो बाजी गला डेस्क की बेंच रे की पड़ी गला गोटे जगह रे खंडिया गला ताले जो जगह रे बाजिला से डेस्क किंबा बेंच की से कबाट झरका ताको भी पिटी देले से खुशी हो जाए पिटी दबा रह तो कौन कला आम छुआर नाई 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 ताको बाड़ेवा कह ताको दुई थर ठाए ठाए बजे देले से कबाट को से खुश जे जाओ से टमाटो खाइला तो ये होची
Animistic thinking जोटा डेवलप करे ड्यूरिंग 4 year old कहूची तो एटा चाइल्डहुड रे बेसिकली देखिया को मिलुछि नॉन लिविंग को लिविंग बोली भाबिबा एनिमिस्टिक थिंकिंग आउ 10टा क्वेश्चन which of the following is a typical characteristic of students having autism typical characteristic of students having autism रहो रे ननी रश्मि टिके चाउल बरा पछे खायमा पहिले क्वेश्चन गिरा सारी दो हां which of the following is a typical characteristic of students having autism very good frequent repetitive and recurring behavior already we have discussed this तापर assertion region type रो गोटे क्वेश्चन आछे मजा नियो यार to facilitate critical thinking among learners teachers should expose them to diverse situation and differing perspectives ठीक लागेला तम इच्छा students learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conversation across differences ठीक लागेला तम इच्छा मते लागिला आ मते एक्सप्लेनेशन भी बा रीजन भी ठीक लागेला so B is the right answer thank you all thank you very much आपको जवाब children learn more effectively if a concept proceeds from तभी हमें करिछ जनरल टू स्पेसिफिक हमें करिछ काहे कि ना कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हेले थी केता सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हेतले सिंगल कर देला पुनी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एटा एनीवे ठीक अछि जेनरिक टू स्पेसिफिक इज द राइट आंसर जदि कांसेप्ट को एमती जाउची ताहले हमें ठीक रे बुझी परिबा बा कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को ताहले छुआ बल रे बुझी परंती सेमती 244 which of the following statements about nature of mathematics are most appropriate इप्सिता ज्योत्सना जयंती टिकेश्वर वेरी गुड बहुत बढ़िया स्वर्णा रश्मिता रोजा पूर्णिमा प्रशांत दिव्यस्मिता सुनंदा विश्वजीत अमोल कुल श्वेत पद्मा शिवराम स्वाति पूर्णिमा ओके रितांजलि गौतम मनु सुश्री तनया ओके ठीक जा करूछ ठीक अछि बोली मु भाबुछि ए हेइतिबो ताले आ it helps the child to be creative it helps nurturing the children's imagination child's imagination it is based on deductive reasoning always convergent महा मुश्किल जिनसोटा कहितला divergent हवा कहितले मजा आस्था किंतु always is always not good always is just standard things always is standard जिनसोटा टिके समस्त पे काम रे न आसी पारे which of the following statement is not correct about assessment assessment सहित संपर्कित केउ उक्तिटी सठिक नुहे देखो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक देखो क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस आगो मने पकई दियो टिके क्राइटेरियन कहले हमें कोटा कहूचे ओटीटी ओएसएसटीटी ये सब नॉर्म रेफरेंस टा हला कोन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट टा होचे सीबीटी से बीएड रहू कि टीचिंग जॉब्स रहू कि जे कोनसी जॉब रहू नहीं कि so तमे कहूछ जे डी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस वेयर ए स्टूडेंट स्टैंड्स as compared to other student in his or her performance purely correct completely correct but not correct which
तेणु ये कौन से हिसाब रे आंसर हैला भले लागुन कहीं देखो कंपैरिजन तो हुए ना नॉर्म रेफरेंस रे सीबीटी रे कंपेयर करा जाए ना अन्य मानकर अदर्स परफॉर्मेंस सहित करा जाएनी ताहले सी हो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमेडियल टीचिंग यस करेक्ट आम कर डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रिमेडियल कहीं आम जानिले तार पोजीशन कौन तार रैंक कौन तार ग्रेड कौन सब जिन जापर ओके अदर्स मानकर कंपैरिजन रे तार सिचुएशन कौन तार डायग्नोसिस कले से अनुसार रिमेडियल टीचिंग आम दबा सो सी होची राइट आंसर नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट कोइछ कहीं नॉर्म रेफरेंस रे तो तुम दे पारिबो दबा कहि देली हां केबे दे पारिबो केबे दे पारिबो कहीं कि सीबीटी 1 सरी गला ना एटा होची समेटिव टाइप रो समेटिव रे तमे डायग्नोस्टिक रो फैसिलिटी कोड पाइलो तमर तो रिजल्ट बाहरी गला सीबीटी रे तमे तो रैंक पाई गलो तमे आउ डायग्नोसिस करके रिमेडियल टीचिंग दबारो कोठी सुजोग मिलला तुमको तो यूजफुल कहि हबो कि ना तो नॉट करेक्ट तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बुझिलो कोन कहि क्वेश्चन कहूँ कोटा ठीक नुह अरे नॉर्म रेफरेंस तो सीबीटी हला तुम तो समेटिव असेसमेंट एटा तुमरो तुमरो एनुअल एग्जामिनेशन जेमती एटा से टाइप रो जिनसोटा तुमरो सेमिस्टर एग्जामिनेशन टाइप रो जिनसोटा एटा एबे हला क्लियर तो एटी डायग्नोसिस नहीं नॉट यूजफुल फॉर डायग्नोसिस मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल फॉर्मूला डेमोन्स्ट्रेट करिवारे हेल्प करिवो कि मे नॉट बी मते लागुनी हेल्प स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग निजे निजे ताको यूज करके सीखि जिवे हेल्प्स टीचर इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन एटा भी हे परिबो डेवलप्स लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लास एटा भी हे परिबो तो बी सी डी नहीं तो मोर अप्रोप्रिएट बी और सी ना बी और डी टीचर को हेल्प कोन करूची सेटा लिस्ट कंसर्न हमें लिस्ट कंसर्न एटा लिस्ट कंसर्न एनवायरनमेंट भलो करूची एटा बेसी इंपोर्टेंट तो डी और बी को ऑप्शन रे अछि देखो बुझि पारलो काहे कि बीडी हला काहे कि तमा सब बीडी करिचो किबा बीडी करिवो ना स्टूडेंट को लर्निंग रे हेल्प करे और एनवायरनमेंट बनाए ए दीटा मोर अप्रोप्रिएट काहे कि हेल्प्स टीचर्स टीचर को कोन हेल्प कला न कला सेत्र कोन मिलिबो लर्निंग आउटकम आसीबा दरकार इफेक्टिव होबा दरकार एनवायरनमेंट बनिबा दरकार माहौल बनिबा दरकार सेल्फ लर्निंग करिबा दरकार छुआ बुझिलो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी classroom researches have shown that most of the students find mathematics more difficult than the other subjects they study in the same class which of the following aspect of nature of mathematics adds to this fear कौन एमती यार गुणटी अच्छी अंकर जे ये भय करे दिए छुआंक कहीं कि अदर सब्जेक्ट अपेक्षा मैथ रे बेसी डिफिकल्ट फेस करते व्हाट इज देयर कौन इन नेचर टच yes the abstract nature of primary concept in mathematics abstract nature actually कोठी यूज होची बाबू किए जानी आज पर्यंत
से त्रिकोणमिति का जीवन रे कोठी व्यवहार हैला न हैला से जदी इंजीनियरिंग कला कि रिसर्च कला सेठी यूज हैला न अदरवाइज लाइफ रे केतबेले आसलानी एब्स्ट्रैक्टनेस ट्रिगोनोमेट्री करी करी पिला थकी गले हां विभिन्न प्रकार थियोरम्स करी करी थकिले लाइफ रे यूज हैलानी तो रियल लाइफ सहित एते कनेक्टेड न तो एब्स्ट्रैक्ट नेचर जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग depicts a situation where children are constructing knowledge on their own. Exploring multiplication patterns using them. Manipulatives दिया जाउची तांको लाइक नंबर ग्रिड्स टोकन्स अरेंज्ड रेक्टेंगुलर अरे जे सब दिया जाउची से माने निजे एक्सप्लोर करछन मल्टीपल पैटर्न्स छुआ एक्टिव अछन एंड एक्सप्लोरिंग हेले तो मार दलो कोन ना A teacher uses role play method in mathematics class. Her aim is math class रे role play method करूछंती टारगेट कोन अछि सब बेले एंटरटेनिंग इज नॉट द अल्टीमेट टारगेट सब बेले अलगा किछि था एंटरटेनिंग तो हबो ता सहित मेन टारगेट ता कोन इट्स प्रोजेक्टिंग आइडियाज कार आइडिया कोन अछि से विषय रे जानिबा पय 250 प्ले माध्यम रे नंबर सेंस हमें डेवलप करछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल ऑफ सबइटाइजिंग सबइटाइजिंग स्किल ऑफ सबइटाइजिंग सबइटाइजिंग कोन हमें समस्त करछे लाइव रे आगरु हमें कहउतले 10 टा पारा थिले 4 टा उडी गले केते रहिला सेमाने आगो 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9 10 4 टा उडी गले 1 2 3 4 रहिले केते 1 2 3 4 5 6 कहउतले पिला बेले हमें भी करिछु सेते बेले हमरो ए स्किल टा डेवलप करन नथिला सबइटाइजिंग स्किल without counting knowing the number know the number without counting it students roll a die and is able to say it is 4 without actually counting the dots कोनिबा पडुनी without counting से माने कोइ परुछन एटा आजिरो सेशन रो लास्ट क्वेश्चन थिला एंड सरी गला परे एटा उटे आछि कोन देखो बुझिबा को चेष्टा करो जदि बुझी गलो भलो कथा जदि न बुझिला भी भलो कथा सब बेले सब जिंस मु बुझाई देबी जदि भी भलो न निजे पढो बुझो बहुत इंपोर्टेंट वन बहुत इंपोर्टेंट जति कि क्लास रे जो क्वेश्चन जेम थिला ये भी सेति कि इंपोर्टेंट सो
Thank you very much for your active participation. Stay connected always with Exploring Goals. जो मैंने like करना like कर दो मने करी and subscribe जो करना subscribe भी कर दो Exploring Goals YouTube channel को and help Exploring Goals application is also there. You can get profit out of it. हमर जो courses अच्छी तो मैंने ताकू enjoy करी परिबो learn करी परिबो and for more details you can WhatsApp me to join in Exploring Goals application. जार लिंक मध्य ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अछि फॉर B.Ed entrance DED entrance the course price is 399 and the combo subscription all TET and teaching exams by LTR OSST RHT JT OTET सबुति ପାଇଁ course fees again 399 सेमती Odisha education service teacher education educator and foundation for all competitive examination ए सब courses अछि for more detail you can WhatsApp in the given number. धन्यवाद. Thank you very much समस्तंकु अमूलकुल सोनाली मनु रश्मिता शुभलक्ष्मी कौशल्या जयंती सुनांडा ज्योत्सना प्रियंका अमित मनु ज्योतिर्मयी विश्वजीता प्रियंका कविता रानी झरणा रश्मि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद. होप यू आर डूइंग ग्रेट and hope you will come out successful in your life, not in your examination, in your life. That is more important than examination. Thank you Soumya Ranjan Subhadra Gayatri. धन्यवाद समस्तंकु. Take care, stay connected. Good night. Jai Jagannath.